सर, ऑपरेशन सिंदूर एक सफल ऑपरेशन भारतीय सेना का और मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान। हिंदुस्तान ने कर दिखाया जिसकी हिंदुस्तान के अवाम को अपेक्षा थी। हमारी तीनों सेनाओं ने मिलजुल कर ऐसी कार्रवाई की है जिसमें पाकिस्तान के 9 टेररिस्ट कैंप्स को जो है उनको बर्बाद कर दिया हर प्रकार से। पाकिस्तान ने 6 को एक्सेप्ट किया है और कहा है कि उनके तकरीबन 8 लोग मारे गए और 35 लोग घायल हुए हैं। वास्तव में उनकी कैजुअलिटीज बहुत बड़े भयंकर हुई हैं, बहुत बड़े तादाद पे हुई हैं। हो सकता है कि हाफिज सईद मसूद अजहर बिकम पार्ट ऑफ हिस्ट्री, लेकिन इसके बारे में जानकारी बाद में मिलेगी। पाकिस्तान ने जबरदस्त कोशिश की है रिटेलिएशन करने के लिए। कहा जा रहा है कि उसका एक हवाई जहाज मार गया है जिसने बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की है, लेकिन उसकी अभी पुष्टि नहीं हुई। साथ ही साथ उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर सिविलियन टारगेट्स को अटैक करने की कोशिश की है। वहां शेलिंग हो रही है। हिंदुस्तान बहुत कड़ा जवाब कार्रवाई कर रहा है और पाकिस्तान को जबरदस्त पनिश कर रहा है। मुझे पक्का यकीन है कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ न कुछ रिटेलिएशन तो होगा, लेकिन हर प्रकार से हम तैयार हैं। जहां तक हिंदुस्तान का हमला था, उनकी एयर डिफेंस रिसोर्सेज ने एक हमले को भी डिटेक्ट नहीं किया। हमारा जो ड्रोन था उनके एरिया के ऊपर घूमता रहा काफी देर तक, टारगेट को सिलेक्ट किया, आइडेंटिफाई किया और उसको फिर एब्सोल्युटली बर्बाद किया। लेकिन उनका एयर डिफेंस ने उनको डिटेक्ट नहीं किया, न्यूट्रलाइज नहीं किया, ना ही उनकी एयरफोर्स कुछ कर सकी। इसके बावजूद कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की नेवी फुल अलर्ट पर थी। और ये जो ऑपरेशन था, ये तीनों सेनाओं ने मिलकर किया। ऐसे हथियार का इस्तेमाल किया जिससे हमको बॉर्डर को क्रॉस करने की आवश्यकता नहीं हुई थी। अगर आपको याद है, सर्जिकल स्ट्राइक जब हमने की थी उन्हीं के बाद में, तो हमने 5 जगह पे अपने फोर्सेस को भेजा था क्रॉस द बॉर्डर। जब बालाकोट स्ट्राइक की थी तो हमारे 20 हवाई जहाज क्रॉस द बॉर्डर गए थे। इस बारी किसी हवाई जहाज को क्रॉस करने की आवश्यकता नहीं हुई। हमने केवल और केवल जो है तीनों सेनाओं के ऐसे हथियार इस्तेमाल किए अपने ही देश के अंदर से और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। देखो, हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा है कि जिन्होंने ये पहलगाम में स्ट्राइक किया है, हम उनको किसी प्रकार से नहीं बख्शेंगे, उनके आकार को किसी प्रकार से नहीं बख्शेंगे। जहां भी है दुनिया के किसी कोने में छुप जाए, हम उनको डिटेक्ट करेंगे, ट्रेस करेंगे और मार के रहेंगे। एग्जैक्टली वही हिंदुस्तान ने किया है और हिंदुस्तान ने साफ तौर पे दुनिया को कहा है कि जो हमने कार्रवाई की है ये केवल और केवल राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस था। हमने किसी प्रकार से उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन को नहीं किया अटैक, हमने किसी एयरफोर्स के इंस्टॉलेशन को नहीं किया, आईएसआई के हेडक्वार्टर या आर्मी हेडक्वार्टर को अटैक नहीं किया, कोई भी उनकी वाइटल इंस्टॉलेशन के लिए नहीं किया। केवल और केवल हमने टेररिस्ट को नॉकआउट किया, जो हमारा हक बनता है। लेकिन अगर पाकिस्तान ने जो भी कार्रवाई की तो हिंदुस्तान हर प्रकार से तैयार है उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का भी ध्यान रखा गया है। काउंटर पार्ट अदर कंट्रीज के खासतौर पे यूएसए के, उनको भी फोन पे बात की है देश के एनएसए ने, अजीत डोभाल ने। इस तरह से आप इस कदम को देखें। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हिंदुस्तान ने डिप्लोमेसी को ध्यान में रखा हुआ है। जैसे ही हमला हुआ उसी के कुछ मिनट के बाद में अजीत डोभाल ने माइक रूबियो से बातचीत की, सऊदी अरेबिया को बताया, यूएई को बताया और कुछ और कंट्रीज को बताया, फ्रेंडली कंट्रीज को हमले की कार्रवाई की है। और केवल हमने, ये बड़ा फोकस था, बड़ा मेजर था, नॉन एस्केलेटरी था। केवल और केवल हमने टेररिस्ट को ही नॉकआउट किया है और टेररिस्ट कैंप्स को, उनके हेडक्वार्टर्स वगैरह ये कैंप्स को नॉकआउट किया है। किसी प्रकार से कोई सिविलियंस को नहीं हमने हिट किया, कोई मिलिट्री को या एयरफोर्स टारगेट्स को हिट नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम है, इसके पीछे एक इमोशनल मैसेजिंग भी है शायद। इसमें किसी प्रकार कोई शक नहीं। जिस माफिक को उन्होंने कोल्ड ब्लडेड से एक न्यूली मैरिड लड़की के सामने उसके हस्बैंड को मारा, उसी को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन सिंदूर रखा है, ताकि पाकिस्तान को साफ नजर आए कि हिंदुस्तान जो है एक बनाना रिपब्लिक नहीं है। ये आज की जो लीडरशिप है बड़ी डिसाइसिव है और प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको बख्शेंगे नहीं। वास्तव में ना तो हमने उनको छोड़ा है ना उनको बख्शा है। इस ऑपरेशन के इफेक्ट क्या दिखते हैं आपको? इसके ऑपरेशन का इफेक्ट तो पाकिस्तान जो है इस समय कम्प्लीटली रैटल्ड है, कम्प्लीटली बैकफुट पर है। हो सकता है कि बहुत बड़े पैमाने पर मुनीर खान के खिलाफ बगावत हो सकती है। डीएलए इसका फायदा उठाएगा, तरीके तालिबान पाकिस्तान फायदा है और पाकिस्तान के अंदर ही एक किस्म से इंटरनल डिवीजन हो गई है। इमरान खान जो जेल में है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये कसूरवार जो है ऑपरेशन जो हुआ है बिकॉज ऑफ मुनीर खान। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये मुनीर खान का पागलपन था जिन्होंने पहलगाम किया और उसी का पनिशमेंट जो है पाकिस्तान झेल रहा है। India has reacted viciously and very violently. Our
counter-strike has been very measured, very focused and non-escalatory. We have not hit any civilian target, we have not hit any military target, we have not hit ISI or we have not hit any of the air bases or any vital installation in Pakistan. We've only knocked out terror camps deep inside Punjab as well as in PoK, thereby clearly indicating that what Prime Minister had said, that we will not spare you irrespective of where you hide yourself. And this time, unlike in the past where the counter-strike was carried out in PoK and in Pakhtunkhwa, this time we hit the Pakistani heartland. 3 of the terrorist camps were in the Pakistani heartland, Muridke, Bhavalpur and Sialkot. And we've knocked them out and devastated them beyond belief. This notwithstanding, Pakistan is claiming that only 6 terrorist camps have been hit and only 8 people have died and 35 have been injured. Casualties have been horrendous, but Pakistan will remain in denial mode. The Pakistan Defence Minister, on the other hand, has gone on to say that 5 Indian Air Force aircraft have been shot down. This is absolute bluster. No Indian Air Force aircraft of any sort of the Indian Army or the Navy for that matter crossed the border. All strikes were carried out from this side of the border. Hence, claiming that 5 aircraft have been shot down is clearly indicative that they will possibly go tomorrow and say that हमने जो करना था ये हमने कर दिया, हमने हिंदुस्तान को मारा बुरी तरह से, and possibly de-escalate. But Nawaz Sharif is saying that India imposed war on them. Well, Pakistan will continue to say that. They are not realizing the fact that what they did at Pahalgam was nothing short of an act of war. And we waited for full 14 days for Pakistan to take some sort of an action against the terrorists who had perpetrated this. But instead of taking any action against them, they kept unprovoked shelling of Indian along the LOC almost around 40 times and took no action whatsoever, thereby leaving India with no choice other than striking back. And we hit them very hard at the place and the time of our own choosing. Surprise, secrecy and speed were all attained, and Pakistan could not detect any of these attacks that went in. International diplomacy also kept in part. The counterpart of our country spoke to the 9 countries including the US. Prior to this attack, India had already briefed almost 80 plus ambassadors of various countries. We had told them loud and clear that this is what Pakistan has done and we were bound to react. Now, immediately after the strikes were carried out, within a few minutes of that, NSA Ajit Doval spoke to Mike Rubio, the American Secretary of State, and thereafter he also spoke to Saudi Arabia, UAE and some other countries, friendly countries. We categorically told them that what we've exercised is right of self-defense. It is offensive defense, and our missions were focused, measured and non-escalatory. However, if Pakistan retaliates, India will be bound to react viciously. PM Modi led it from the front, saw all the operation live. As one of the terrorists told to a woman, tell to Modi why we are not killing you. This is the best answer, I think. Our Prime Minister has always led from the front. Whether it was Uri, he was sitting in the operations room till the time our last soldier returned back. When we carried out a strike in Balakot, he was again sitting in the operation room till last of the aircraft came back safe and sound. And when F-16 was shot down and Abhinandan was captured, he told Pakistan loud and clear that if you don't free him within 48 hours, we will let hell loose on you. And this time also he led from the front. He was sitting in his home monitoring the operation throughout. And that is what leadership is all about. What are the options Pakistan left out? Pakistan is bound to retaliate because they have to have safe face. But they're calling a meeting of the National Security Council of Pakistan at 10 a.m. and thereafter they're going to decide what they ought to do. I'm very certain that they will try and react viciously along the line of control and also try and ensure that some of the aircraft of theirs go across to enter Indian airspace. All of those who will try and cross the Indian airspace will be shot down without an iota of doubt. They also may resort to missile firing like what we've done. But should they attack any asset of ours, civilian or military or air force or a naval asset, Pakistan will be punished to an extent that they cannot even imagine.